Hi, good afternoon, everyone. Beta, in today's class, we are going to talk about a very important topic, and that is GST, Goods and Service Tax. So, आज का aim क्या है? क्या करना है आज हमें? आज हमें Goods and Service Tax क्या होता है? पहले वो समझना है. We have to understand what is Goods and Service Tax. Then, secondly, Beta, we have to understand how it was formulated. GST कैसे formulate हुआ इंडिया में? देखो, किसी भी टैक्स की जब हम बात करते हैं या किसी भी चीज की बात करते हैं, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम इंडिया में बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड उस लॉ, उस ऑर्डर, उस एक्ट की एक जर्नी होती है ना? ऐसे ही नहीं पास हो जाता. सो टुडे इफ आई वांट टू इम्प्लीमेंट समथिंग,
then it has to go through a proper process. उसका एक पूरा process होगा through which it has to pass, right? What is that process? वो process क्या रहा GST के लिए? How GST came into being? That's the next thing that we want to understand. ठीक है बेटा? Next, we want to go ahead and we want to talk about the GST Council. GST Council क्या है? How was GST Council formulated? Who are the members of GST Council? GST Council के members कौन-कौन हैं? कौन-कौन GST के council में आता है? That's the next thing we want to understand. I also want to focus on GST rates. माने क्या वो 0% स्लैब है, 5% स्लैब है, 18% स्लैब है? कौन सा गुड किस स्लैब में आता है? What are the GST rates? What are the different slabs of GST? I also want to focus on that. But usually we want to go ahead and we want to also look into the economic side of GST. हमें GST की economic side भी देखनी चाहिए. Economic side मतलब क्या? Before GST कैसा impact था टैक्स का गवर्नमेंट पर और लोगों पर, और आफ्टर GST क्या impact है लोगों पर और गवर्नमेंट पर? So what has been the impact of GST on people, on government, and what is the impact of other tax on government, on people? तो पहले बाकी taxes जो भी थे उनका क्या impact था और अब क्या impact है? That is also something that we want to study. I hope this is making sense. Okay. So let us start. There will be some keywords which I have highlighted. जो भी keywords हैं जिनको भी मैंने highlight किया है, you have to remember those pointers. उन words को याद रखना बहुत ही जरूरी है. You have to remember those keywords. Okay. Okay. Let's start the session. So read it out, beta. Let's start. Whatever is shown here, beta, these are my notes, my personal notes. But I want you to refer to these notes, right? These notes are very, very important. I will be putting these notes on your portal. ये portal पे भी notes available रहेंगे. But जब मैं ये explain कर रही हूँ notes को, it is a good idea that you write them down. लिखना जरूरी है exam में. So these are all theoretical things, ना? So theory याद ही तब होती है जब आप उसे लिखते हो. When you write it down, you will remember the theory aspect. So it is important that you write these things down. Okay. ठीक है बेटा, let's start. So first of all, we are saying GST is the destination based tax on consumption of goods and services. Destination based means what? So every good is destined. Destiny होती है हर गुड की. Destiny मतलब क्या होता है? मतलब जहां से मेरा गुड शुरू हुआ, जैसे इमेजिन करो ये कुर्ता that I am wearing, है ना? इसकी डेस्टिनी है टू रीच मी, बट ये कहां से शुरू हुआ? इट स्टार्टेड फ्रॉम अ कॉटन और थ्रेड से क्लोथ बना, क्लोथ को शेप दी गई तो कुर्ता बना, कुर्ता जो है वो शॉपकीपर के पास गया, शॉपकीपर से फाइनली कंज्यूमर के पास गया. सो डेस्टिनेशन ऑफ दिस इज विद मी, है ना? सो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या हो गया? वो टैक्स जो जहां पर एक गुड की डेस्टिनेशन है, अगर वो वहां जाके लगता है, इफ इट इज implied on the destination, the consumption of good and service, then it is called a destination based tax. ऐसे ही एक बर्गर लेते हैं, हाँ, तो बर्गर बनाने के लिए एक शॉपकीपर ने कहीं से बन खरीदा, कहीं से टिक्की खरीदी, उसको उसने अच्छे से अलाइन किया और आपको आगे सेल किया. The destination of the burger is the consumer. So who will pay tax? The consumer will pay tax on that burger. Are you getting it? So what is GST, beta? GST is basically a destination based tax. GST को हम क्या बोलते हैं? Destination based tax. It is put on the final destination of the product. Product की final destination पे GST लगता है. Okay, now continue.
It is proposed to be levied at all stages from manufacturing to final consumption with credit of tax paid at previous stages to set off. Let's understand this thing. What am I saying? I am saying कि ये जो टैक्स है इसको पहले तो हमने हर स्टेज पे लगा दिया. मतलब हर स्टेज पे लगाने का क्या मतलब हुआ बेटा? हर स्टेज पे लगाने का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉटन का ही एग्जांपल ले लेते हैं ना, तो आई हैव दिस शॉपकीपर वन, दिस पर्सन वन, एंड ही इज मैन्युफैक्चरिंग कॉटन. ये कॉटन बना रहे हैं. एंड देन आई हैव दिस पर्सन टू, बेटा ये थ्रेड बना रहा है इस कॉटन से. एंड देन आई हैव दिस पर्सन थ्री, ये इससे क्लोथ बना रहा है थ्रेड से. एंड देन आई हैव दिस पर्सन फोर, ये इस क्लोथ को साड़ी में कन्वर्ट कर रहा है. एंड देन आई हैव दिस पर्सन फाइव, जिसने फाइनली इसको कंज्यूम किया. और भी चेन हो सकती है, होलसेलर, रिटेलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो व्हाट आर वी सेइंग बेटा? ईच पर्सन, अभी के लिए इस पर्सन ने जीएसटी पे किया, इसने भी 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 जीएसटी पे किया. एवरीबडी हैज पेड जीएसटी. हर एक ने टैक्स पे कर दिया. बट लेट्स अंडरस्टैंड, everybody pays tax on the same product. Ultimately तो एक क्लोथ, ये साड़ी बनी ना, but I've paid it here also and here also and here also. So it will lead to double taxation. It will lead to duplication of taxation. एक ही टैक्स बार 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 आप चार्ज कर रहे हो. So what this leads to is duplication of taxation. है ना? इसने भी दिया, इसने भी दिया, इसने भी दिया, इसने भी दिया. डुप्लीकेशन. वही. अब इसको हम कैसे देखें? अब कैसे इंश्योर करें कि हर लेवल पे एक ही प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं देना? प्रोडक्ट एक ही है. ये 10 रुपीज का कॉटन था. दिस कन्वर्टेड टू 15 रुपीज व्हेन इट बिकेम अ थ्रेड. दिस कन्वर्टेड टू 30 रुपीज व्हेन इट बिकेम अ क्लोथ. दिस 30 बिकेम 35 जब वो साड़ी बना, और कंज्यूमर को हमने 45 में सपोज सेल किया मार्जिन के साथ. तो अगर हम 45 पे टैक्स लगा रहे हैं, 45 ऑलरेडी इंक्लूड्स दिस, है ना? सो व्हाट शुड वी डू? वी कैन गो अहेड एंड सेट दिस ऑफ बाय जनरेटिंग व्हाट इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट. क्या जनरेट करेंगे हम? इनपुट टैक्स क्रेडिट. व्हाट विल इनपुट टैक्स क्रेडिट डू? जितने भी इनपुट्स, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स जो थे, जिन्होंने इनपुट प्रोड्यूस किया, जो गुड्स पे टैक्स चार्ज कर रहे थे, हम उन्हें क्रेडिट दे देंगे कि यू कैन क्लेम दैट बैक बिकॉज वी हैव बॉट इट ऑन द फाइनल प्रोडक्ट. सो दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट ऑफ टैक्स. एंड ये पे किया जाता है कहां पे? इट इज पेड ऑन ऑल प्रीवियस स्टेजेस टू सेट दैट ऑफ. पुराने, ताकि हर लेवल पे सेम ही प्रोडक्ट पे बार बार टैक्स ना लगे. टू सेट दैट ऑफ, व्हाट विल वी डू? वी विल जनरेट इनपुट टैक्स क्रेडिट. इज दैट क्लियर? अच्छा, लेट अस गो अहेड एंड रीड दिस आउट फर्दर. इन अ नटशेल, ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स्ड. सो हम क्या कह रहे हैं कि हमें सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स करना है. बेटा, how much is the value added when I go from 10 to 15? 5 रुपए. I'm adding 5 more rupees to it now. From 15 to 30, I'm adding 15 more rupees to it. Now, this is my value added. 5, 15. 15 से 35, 30 हो गया. 30 से 35 कितना हो बेटा? 5. And 35 से 45, 10 rupees. So, at every level, I am adding value to my product. जितनी value मैं add करूंगी, the value that I add, that is the tax that I will be charging. So value addition पे ही tax charge होना चाहिए. That is what this is saying. ठीक है? Come forward. Though GST is a multi-point tax. Multi-point क्यों? Because I mentioned that it is taxed here, 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 here. It's a multi-point tax, but it is not levied on total value. हम पूरी वैल्यू पे नहीं लिवाई कर रहे हैं. हम सिर्फ जो वैल्यू एडिशन हो रही है उस पे लिवाई कर रहे हैं.
So we are only putting tax on this 5 rupees जो value add हुई है, only on this 15 rupees जो value add हुई है, right? Only on the 5 rupees जो value add हुई है. So if you levy it on the full value, it will lead to duplication, and उस case में you have to issue the credit system, input tax credit. Otherwise, we are saying it is only levied on the value addition by the supplier. I hope this is clear. These points are very, very important. So abhi ke liye beta, just keep, I hope you're making notes simultaneously with me. एक जगह पे ना कहीं पे make a note of features of GST, है ना? और उस feature of GST में the first point that is important is that it is a destination based tax, right? That's the important point. Then it is only charged on value addition. You should remember this. And then this is again important, that it is a multi-point tax. It is taxed at each point, but it is only taxed on the value addition. जो value add हो रही है, सिर्फ उसी पर हम GST tax कर रहे हैं. Okay, come to the next point. This says GST is an indirect tax levied on goods and service in India. I want to explain this point a bit. So when we talk about taxes, बेटा दो तरीके के टैक्स हो सकते हैं. One is called direct tax. One is called as indirect tax. डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? वो टैक्स जो हम डायरेक्टली चार्ज करते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स. You earn income and you pay tax on income. That's a direct tax. है ना? So direct tax is basically the tax which is charged on the same person. तो एक तरीके से अगर हम थोड़ा इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बोलें, इकोनॉमिक्स में हमने टैक्सेशन वी हैव स्टडीड दैट, मतलब हमारा इंसिडेंस ऑफ टैक्स, है ना, एंड चार्जिंग ऑफ टैक्स सेम है, राइट? सो इंसिडेंस मतलब on whom the tax is falling, टैक्स किस पे चार्ज हो रहा है. So the tax is paid by the people and the tax was also charged on the people. लोगों से ही गवर्नमेंट ने टैक्स मांगा और लोगों ने ही टैक्स पे किया. That is income tax. मैंने इनकम अर्न की, गवर्नमेंट ने मेरे को इनकम टैक्स पे करने को बोला और मैंने ही गवर्नमेंट को टैक्स पे किया. That is direct tax. But indirect taxes, when the incidence and the charging are on different people. मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज किया मैकडॉनल्ड से ऑन इट्स बर्गर. मैकडॉनल्ड्स ने ये टैक्स कंज्यूमर पे ट्रांसफर कर दिया. एंड व्हेन यू ईट दैट बर्गर, जब आप वो बर्गर खाते हो जो 25 रुपीज का है, यू आर पेइंग 28 ऑन इट. व्हाई? Because you are paying tax on it. Consumer is paying the tax, right, to McDonald's. McDonald's is paying it to the government, right? So you are indirectly paying tax to the government, not directly. आपने जाके हर बर्गर पे जो अमाउंट है वो जाके गवर्नमेंट को नहीं पे कर दिया कि ओके टेक दिस टैक्स. You paid it to the producer and producer paid it to the government. आपने प्रोड्यूसर को दिया, प्रोड्यूसर ने गवर्नमेंट को दिया. So this becomes an indirect tax system. All goods and service taxes, जितने भी goods पे पहले भी लगते थे tax, all of those were indirect taxes. So beta, what are we learning? We are learning that GST is an indirect tax levied on goods and services in India. Okay, come forward. It has consumed many indirect taxes, so it is comprehensive. So I will talk about this first. Comprehensive का क्या मतलब है? देखो पहले इंडिया में ना बहुत सारे टैक्सेस थे, एंड आई विल शो यू दैट इन द कमिंग नोट्स ओनली. सो देयर वर सो मेनी टैक्सेस इन इंडिया. क्या क्या टैक्सेस थे? वी हैड सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स. इंडिया में देयर वर मल्टीपल टैक्सेस दैट वर चार्ज्ड. इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने एक अम्ब्रेला के अंदर लिया है. We brought it under one umbrella and we called that as GST. So how can I just remember this?
But I can remember it exactly like an umbrella. I can say that this is my GST. This is my GST. ये GST है. And पहले क्या थे? इस umbrella के अंदर जो अलग-अलग taxes आते थे, we have brought it under one roof. So we had the custom duties. We had entertainment tax, octroi tax, sales tax, special sales tax. All these taxes, जो भी अलग-अलग taxes होते थे, we have brought them under one roof, and that is called GST. So, क्योंकि GST has, made things comprehensive, it has brought things together. That is why it is called as a comprehensive tax. Okay, fine. Now let's move forward. It is also called as a multi-staged tax because it is levied at every step of production process. I've already explained you this. You can just underline the word multi-stage. So underline multi-staged. Okay, now let's go ahead and read it further. In India, GST is a tax levied uniformly throughout the nation on the supply of goods and services. इसका थोड़ा सा समझो. How many of you have traveled by railways? All of us. कभी एक बारी लाइफ में, दो बारी लाइफ में हमने हमेशा रेलवे से ट्रैवल किया. जब when the train is passing, suppose I travel from north to South India. I'm going from Delhi to Kerala. Okay. I am passing through multiple states. मैं अलग-अलग स्टेट से जा रही हूँ. हर स्टेट से मैं एक पानी की बॉटल खरीदती हूँ. उस वाटर बॉटल में it's written that price in this state is this much, other states is this much, and that price of the water keeps changing, suppose. What does this mean? इसका क्या मतलब है? मतलब same product अलग-अलग states में अलग-अलग price पर है ना? एक और example लेते हैं हम. Consider the example of petrol. When you go from one state to another and you get your car filled with petrol, the price differs. हर चीज का, हर petrol का from one state to another, the price will be different. है ना? Take another example. But what used to happen is the following. Suppose I tell you that my product, it is manufactured in Kerala. Let me give you this example. Suppose I tell you that my product, it is manufactured in, say, Assam. And this has to reach all the way to Delhi. तो इसमें बहुत सारे स्टेट के बॉर्डर्स आएंगे. State borders. Right? Earlier, हर state border पे, जिस state border पे आप थे, हर state border पे you have to pay some tax. So, by the time this product will reach Delhi, ये बहुत inflate हो जाएगा. इस पे बहुत ज़्यादा price इसका बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि मैंने जो state border मेरे ट्रक ने पास किए, at every state border, I paid tax, and I finally reached Delhi. There is no uniformity. अगर यही product को असम से केरला जाना है, तो number of borders अलग होंगे, tax अलग होगा. अगर दिल्ली जाना है, number of borders अलग होंगे, tax अलग होगा. So when the same product had to reach different parts of the country, its price kept on changing. उसका price continuously बदल रहा था. That means there was no uniformity. है ना? Price uniform नहीं था. But now that's not the thing. We have the same tax rate on the product, and वो across the nation same ही है. So this means that the system is uniform. हमारा जो tax है वो uniform है. So GST is bringing uniformity throughout the nation on the supply of goods and services. Okay, fine.
Continue. It is also imposed on goods imported from outside the country. So even on imports, GST is plugged in. Clear? Okay, come to the next point. GST integrated the country into a common market by removing barriers across state. यही बात मैं समझा रही थी कि ये जितने भी barriers थे, इन barriers को GST ने remove कर दिया. कैसे remove किया? क्योंकि अब एक common tax rate है that will be employed. So there is a common tax rate that I will be putting, right? There will no more be interstate taxes that you will be paying like this, which will differ. है ना कि ये स्टेट तो 4% चार्ज कर रहा है और ये स्टेट 7%. इट्स नॉट दैट थिंग, राइट? सो इट हैज इंटीग्रेटेड द कंट्री इनटू अ कॉमन मार्केट. एक कॉमन मार्केट आ गई है, आपको सेम प्राइस मिलेगा प्रोडक्ट्स का बाय रिमूविंग बैरियर्स अक्रॉस स्टेट्स. सो ऑल द बैरियर्स हैव बीन रिमूव्ड, राइट? एंड इनेबलिंग स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. तो क्योंकि अब मेरे को बार बार ट्रक को रोककर अलग अलग टैक्स रेट नहीं पे करना, तो जो हमारे गुड्स का फ्लो है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गया, वो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया. ओके, फॉरवर्ड. बिफोर जीएसटी द टैक्स रेट ऑन द सेम गुड्स वर डिफरेंट. तो जीएसटी से पहले सेम गुड्स पर हमारा जो टैक्स होता था वो बहुत अलग होता था, हर स्टेट का अलग टैक्स रेट होता था. बट जीएसटी हैज ब्रॉट इन यूनिफॉर्मिटी. आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन कि जीएसटी यूनिफॉर्मिटी लेकर आया है. हर स्टेट को अलग अलग टैक्स नहीं चार्ज करना, अब एक ही टैक्स चार्ज होगा. सो बेटा दिस यू कैन राइट अंडर द हेडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी. प्लीज राइट डाउन द हेडिंग. ये जीएसटी की इंट्रोडक्शन थी. Introduction of GST. Now let us go ahead and let us talk forward. And I've explained this. Now let's talk about formation of GST. Okay, beta. So GST को फॉर्म करना बहुत इजी नहीं था. देखो, whenever any new thing comes in country, it has to go through multiple problems. ऐसा नहीं है कि जैसे for example, let's say I want to bring a law which talks about something about change in the education system. ठीक है, जैसे I have to bring in the new education policy or any other thing. Then it's not one day business. एक दिन में आप कोई न्यू पॉलिसी, कोई न्यू चीज नहीं लेके आ सकते हो. It's something that has to be done over the period. बहुत टाइम लगता है to go ahead and evaluate things, to propose things, to see whether everyone is satisfied or not. आपको you have so many states in the country ना. आपको हर स्टेट गवर्नमेंट को, हर यूनियन टेरिटरी को अपने साथ रखते हुए आगे बढ़ना होता है. You have to move forward, taking everyone into consideration. Right? So GST में भी यही था. I will talk further. I will talk about that during my notes also. But अभी के लिए इतना समझना है कि जब GST आया, so many states government were afraid. बहुत states government को tension होनी शुरू हो. They started thinking, अभी तक तो हम लोग इतने सारे taxes charge कर रहे थे. We were charging entertainment tax, we were charging octroi, we were charging VAT. We had so many sources of revenue. हमारे बहुत सारा पैसा अर्न करने का, रेवेन्यू का हमारा एक सोर्स था जहां से हम अपने स्टेट को एफिशिएंटली रन कर रहे थे. But now they started thinking that if all these taxes will be removed, how will we get revenue for the state? State के लिए revenue कहां से generate होगा, right? So they started being against GST, right? Now, the state government was against GST. State government नहीं चाहती थी GST आए. The central government wanted to implement GST. That is when they started deciding how many compensation will be paid from the center to state. कि central government, state government को extra पैसा अपने tax share से कैसे share करेगी state government के साथ. So how that compensation will be paid to the state government from the central government,
We will talk about that also. But for now, what is important that whenever anything is launched, it goes through a lot of problems before it finally comes into being. And इसी के बारे में हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं. So the goods and service tax, it was first proposed in 1999. देखो कितने साल पहले, right? So many years back, 1999 is when this GST was first proposed. It was proposed under Shri Atal Bihari Vajpayee. ठीक है, हमारे जब तब के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके अंदर जीएसटी को प्रपोज किया गया, and under the chairmanship of Asim Das Gupta. That is when it was proposed. Okay. उसके बाद Asim Das Gupta committee also tasked with putting in place the back-end technology. तो ध्यान से समझो. Let's understand this. देखो बेटा, एक तो हो गया जीएसटी. One is GST. GST is about unifying the taxes. एक टैक्स सिस्टम, सब लोग मिलके एक टैक्स पे करेंगे. जीएसटी के बैकग्राउंड में we need an efficient technology. Right? What is the aim of this technology? The aim of this technology is to ensure multiple things. इसके बारे में भी अब हम थोड़ी देर में बात करेंगे. GSTN बोलते हैं इसे, Goods and Service Tax Network. Multiple things माने क्या? Whether all manufacturers are paying the tax or not, whether they are paying the right tax or not, whether input tax credit is generated or not. तो एक टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए इतने बड़े इकोनॉमी को सही से एफिशिएंटली रन करने के लिए. That means there is a lot of back-end process related to it. है ना? So that is what we are saying, that during 1999 only we had this in mind कि एक तो हमें जीएसटी लॉन्च करना है, पर दूसरा उस जीएसटी को चलाने के लिए to run efficiently that tax system, we need the back-end technology and logistics also. So we need a good back-end technology and we need good logistics, right? So this is also what the committee was put to do, right? Now, in 2002, देखो 1999 से now I'm talking about 2002, the Vajpayee government, they formed a task force. This is known as the Kelkar Committee. बहुत famous है, हाँ? And Kelkar Committee का aim ये था कि वो हमें tax reforms suggest करे. Tax reforms क्यों चाहिए थे? Why were they important? Because it was felt that the tax system is complex and fragmented. ये दो keywords बहुत important है, complex and fragmented. What do I mean by complex and fragmented? Complex means if I have to bring one product from one state to another state, मेरे लिए ही बहुत confusion है कि मुझे कौन-कौन सा कहाँ-कहाँ tax pay करना. So number one, the tax system was very complex. Number two, it was also fragmented. मतलब अलग-अलग parts में अलग-अलग taxes चल रहे थे. एक ही चीज पे 3 टैक्स पे करने पड़ रहे थे. You were not sure what the system exactly is. So the aim was to replace this system. ये जो भी system था, which was very complex, which was a fragmented tax system, the aim was to remove that. Aim था कि उसको हटा दो. And उसकी जगह पे, instead of that, bring in a unified tax system. एक ऐसा system लेके आओ जो uniform हो, एक ही हो हर एक इंसान के लिए, है ना? जिसकी वजह से we wanted to do 3 things. Read this out. We wanted to go ahead and simplify compliance. मतलब easily tax collect हो पाए. Reduce tax cascading. इसके बारे में हम थोड़ा और बाद में बात करेंगे. But as of now, please समझो cascading effect क्या होता है, इसको समझते हैं. Cascading effect बहुत ही ज्यादा कॉमन है in science. I'm not a science student, but let me try to explain a bit. जितना
Jitna I know, I will explain that science to you. So any product, कोई भी एक object, it's made up of atoms, है ना, or molecules, set of items. ये atoms हैं. ये atoms हैं. When I push this product, अगर मुझे इसको, this is my water bottle. I want to go ahead and I want to push this water bottle. So how is this happening? Beta, when I touch this, suppose I want to hit a ball, kuch bhi, it will go ahead and it will go to the first atom. The atom will start moving क्योंकि मैंने उसको hit किया ना, atom will move. वो atom से उसका जो corresponding atom है, that will also move. फिर third, फिर fourth. So एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, everybody starts hit. सारे atoms move करना शुरू हो गए. And जब सब move कर रहे हैं तो आपका product आगे चल रहा है ना? That's cascading. Same tax में. टैक्स में क्या हुआ ना, एक कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है. कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है? आपको पहला, दिस इज माय प्रोडक्ट, सपोज कॉटन, और मेरा एम है इसको कंज्यूमर तक पहुंचाना इन द फॉर्म ऑफ साड़ी, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया. ईच लेवल पे सबसे पहले एक टैक्स मैंने कलेक्ट कर लिया, मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड, है ना. सेकेंड, अब ये जो प्रोडक्ट है, इफ आई हैव टू स्प्रेड दिस अक्रॉस इंडिया, तो हर एक पे मैंने एक इंटरस्टेट टैक्स दिया, तो टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट होना शुरू हो गया. एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, ultimately leading to the increase in the price of the product, right? I want to reduce this tax cascading effect, right? So that's the second thing that I want to do. And the third thing that I want to do is promote economic integration. When you have one nation, one tax, देखो समझो इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है. One nation, one tax. So when you have one nation, one tax, कि पूरा nation को हम यूनिफाई करके चल रहे हैं, एक साथ लेके चल रहे हैं. We're taking it together because I want to put a one tax on everyone, just one tax. I'm unifying people together, right? Then that promotes economic integration. People are integrated through economic aspects also. So what are the three things we wanted to do? Simplify compliance. It should be easy to collect. It should be a simple technique. Reduce tax cascading and promote economic integration. ये तीन aim थे, main aim, Kelkar committee के. So these were the three main aims of the Kelkar committee, created in 2002. Okay, come further. After years of deliberation and negotiation between center and state, Constitution finally passed a bill in 2014. So that bill was known as beta 122nd Amendment. So ये जो Constitution bill था, it was passed in 2014, right? What was the aim of the bill? The aim was to implement GST. So please keep in line these timelines. So we started from 1999. Then we talked about 2002. Then we are talking about 2014 bill. है ना? अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो bill था, इसका aim था that we want to implement GST, right? And this same bill, जब bill हमने Constitution में amend किया, उसके बाद this bill was passed in May 2015 in लोकसभा. इसको हमने लोकसभा में पास करा, ठीक है. फिर से as I told you, बहुत disagreements हुए कि GST लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, क्या करना चाहिए. तो उसके बाद ये बिल लोकसभा से वापस राज्यसभा, फिर लोकसभा. So there were multiple rounds that took place. And after all those disagreements, finally, in August 2016, the amendment bill was passed. 2016 में ये amendment bill pass किया गया. The most important date, on 1st July 2017, GST was implemented at the midnight by the president under Narendra Modi government. ठीक है. तो finally 2017 के 1st July, बेटा midnight, that means 30th
जून और 1 जुलाई के एकदम बीच में at 12, the moment you strike 1 July, this bill was passed, right, under the Narendra Modi government. After the launch of GST, GST rates have been modified several times. बहुत सारे products जो 5% में थे उनको 12% में किया है, किसी को 28% में कर दिया. So this is something which keeps modifying, right? So after the launch of GST rates को हमने बहुत बारी modify किया है और ultimately ये modification जो भी होती है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर की जाती है. सो द मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस अंडर द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. Excuse me. Okay. Now I want to talk about a dual GST model. Please understand this thing. If I talk about India, so beta, in India, I have the central government, I have state government, and I have local government. So these are the three governments that I have, where center and state play the important role, right? So we wanted to give some tax to the central government and some part of the GST to the state government. That is what is called as dual GST model. Dual GST model means both center and state have different responsibilities. दोनों की अपनी responsibilities है जो उनको play करनी है. और इसलिए दोनों को ही रेवेन्यू चाहिए टू रन द सेंटर और द स्टेट. और रेवेन्यू को करेक्ट करने के लिए दे वांट टू गो अहेड एंड दे वांट टू हैव मनी विद देम, है ना. टैक्स चाहिए, टैक्स कलेक्शन चाहिए, और वो टैक्स कैसे आएगा? जीएसटी के थ्रू. सो जीएसटी इज नॉट ओनली कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी इज ऑल्सो कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राइट. सो वी हैव अ डुअल जीएसटी मॉडल. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, where we are saying that we have two main governments, central and state, and they have the power to levy taxes and collect taxes. ना ही सिर्फ कलेक्ट करना टैक्स को, बट टैक्स चार्ज करने की पावर भी गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट के पास है. सो बोथ दीज गवर्नमेंट्स हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड देयरफॉर both of them need money for it. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए, चाहे फ्लाईओवर बनाना है, चाहे हॉस्पिटल बनाना है, चाहे स्कूल्स बनाने हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए दे नीड मनी, राइट. सो फॉर मनी, फॉर बोथ द गवर्नमेंट्स टू नीड मनी, बोथ ऑफ देम शुड बी लेवाइंग द टैक्स. ठीक है. दैट इज व्हाई वी अडॉप्टेड अ डुअल जीएसटी मॉडल वेयर टैक्स इज एडमिनिस्टर्ड बाय बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है. बट दीज आर सम ऑफ द की एक्ट्स विच वर पास्ड. जो मैं अभी बात कर रही थी ना कि बहुत सारे एक्ट्स हम पास करते हैं. सो दीज आर फ्यू ऑफ द की एक्ट्स दैट आर पास्ड. सो यू हैव CGST Act 2017, UTGST, Union Territory GST Tax 2017, Integrated GST Tax 2017, and GST Compensation to States Act 2017. So I told you that जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कुछ कॉम्पनसेशन स्टेट गवर्नमेंट को भी पे करती है. सो प्लीज राइट डाउन. मोर ऑन दिस लेटर. आई विल टॉक अबाउट दिस इन अ व्हाइल, है ना. तो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बिकॉज वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कॉम्पनसेशन पे करती है, कितनी कॉम्पनसेशन पे करे, ऑल ऑफ दैट इज अंडर द लास्ट एक्ट. Here, beta, we also have what is called as the role of finance commission. इस पे एक अलग लेक्चर लेंगे हम, है ना. फाइनेंस कमीशन क्या करता है? वो बेसिकली डेवोल्यूशन ऑफ टैक्स बताता है. डेवोल्यूशन ऑफ टैक्स का क्या मतलब है? हाउ मच टैक्स विल गो फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, how this tax will be distributed from center to state, that is told by the finance commission, right. So we will talk about that in some time. Anyways, abhi ke liye aage badhte hain. So now we want to understand the GST Council. What is GST Council? See,
GST Council basically has 33 members in it. Let me just go ahead and we should, देखो जो चीजें हमें याद करनी डायग्राम से आसान लगे, make sure that you make a diagram for it. Diagram makes things very very easier for you, है ना? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सिर्फ ये जानना है कि जीएसटी टैक्स काउंसिल क्या क्या करना है, क्या क्या करता है, why not just make the pointers? Pointers will make things easier for you. You will be able to remember these things which are theoretical, है ना? Similarly, if I want to understand कि GST Council का working कैसा है, then again I can go ahead and I can just have this diagram for it. So GST Council has 33 members, beta. These 33 members, out of this, 2 are from center. So remaining kitne ho gaye? 31 na? So 31 come from state and union territories. Out of this 31, 28 come from state and 3 come from union territory. So this is how my GST Tax Council is distributed. Let me just take you further. Now try and understand. When I talk about the GST Council, I have chairperson, right? Who's the chairperson? The Union Finance Minister is the chairperson. And in this chairperson, when I go ahead, ab ek bari, huh? Now currently when I talk about it, you have to also understand that if something becomes, just we know, right, that under special conditions, you can declare a state to be UT and UT to be a state. You can change that. Right? You have to tell me what is exactly Jammu and Kashmir ke saath kya tha, what became what, you have to tell me that. Okay, so search on it. So in that case, beta, wo change ho jayega. Jaise agar union territory, first there were 2 union territories, suppose, and 29 states. And now there are 28 states and 3 union territories. And that keeps getting updated. But each will be represented by 1 member. That is what is important. Huh? Achha, then you have the chairperson. And when I talk about under the chairperson, you have members. Okay, ye member. Okay, beta. Member में सबसे important ये है that we need vice chairperson. तो हमें एक वाइस चेयरपर्सन भी चाहिए. और ये बाकी मेंबर्स क्या होंगे? ईच फ्रॉम 1 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी. तो हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी से हमारे पास एक मेंबर आएगा, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन गो अहेड एंड वी कैन से दैट दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड. सो again, there are multiple ways for you to go ahead and you to do this thing. आप चाहो तो आप एक इतने से डायग्राम से भी इसको याद कर सकते हो, और आप चाहो तो पूरा कॉम्पोजिशन ऑफ जीएसटी को बड़ा सा अलग से बना सकते हो, up to you. But the aim is for me to tell you that the composition of GST is important and you should know about it, right? Okay. So then we go ahead and we talk about, acha, so now what has happened? So just remember this. You have chairperson who is the union finance minister. Union finance minister के साथ you will have a vice chairperson, है ना? Let me just put vice chairperson here so that it is easy to remember. So you can just put vice chairperson here. So you have a vice chairperson and you have union revenue secretary. This is the second level. This is level 1. सबसे top पे, level 1. This is level 2. Level 2 में you have vice chairperson and union revenue secretary. And then this is better level 3. In level 3, you have members, each from 1 state and union territory, right? So when I talk about this vice chairperson and union revenue secretary, they are under the chairperson, under the union finance minister, and then you have under this these parts. Okay.
Okay, come forward now. So now I want to go ahead and I want to talk about the composition. यही मैंने जो ऊपर बनाया. You have Union Finance Minister, who is the chairperson, Union Minister of State in charge of Revenue or Finance, ministers in charge of finance nominated by the state governments. Okay, so now I want to go ahead and I want to talk about who heads the union, who heads the GST Council. So the GST Council, it is headed by currently by Nirmala Sitharaman, and you know that it is actually headed by the Union Finance Minister. Okay. Aim क्या है? GST Council क्यों चाहिए? The aim of GST Council is to ensure that you have easy taxes, to ensure that GST works properly, to ensure that you have all the rules and regulations being followed. तो ये सब इंश्योर करने के लिए कि रूल्स एंड रेगुलेशन सही से चल रहे हैं, जीएसटी सही से चल रहा है, कौन से टैक्सेस अब नहीं चाहिए, कौन से टैक्सेस को हटाकर जीएसटी इंप्लीमेंट किया जाएगा, जीएसटी के स्लैब्स क्या क्या होंगे, उन स्लैब्स में कौन कौन से गुड्स आएंगे. टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट you need the GST Council. So what I will do is, in order for you to remember this beta, we can make a diagram for it. So please write down mandates for GST Council. So what are the mandates? First, ये क्या बताते हैं? Taxes to be subsumed. मतलब कौन से taxes हैं जो अब हटा रहे हैं? Like we removed the entertainment tax and it came under GST. किसने decide किया ये? The GST Council, right? Second, threshold limit. किस प्रोडक्ट पे कितना मैक्सिमम टैक्स लग सकता है? That is to be decided. Rate of tax, slabs of tax, right? Then the inclusions and exclusions. कौन से प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए जाएंगे जीएसटी में और कौन से प्रोडक्ट्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे जीएसटी में, राइट? स्पेशल स्टेटस टू सम स्टेट्स. So all of this, because this is all decided by GST Council. So the aim of GST Council is to ensure that there is smooth working of the GST. GST एकदम smoothly चले. Okay, fine. Now we want to go ahead and we want to talk about the components of GST. GST के क्या क्या components हैं? So एक तो यहाँ पे थोड़ा सा edit कर देते हैं बेटा, इसको ना 4 बना दो. There are actually 5 हैं. I will talk about each of this. There are 4 components of GST as follows. The first component is called CGST. CGST. So CGST क्या है? Central Goods and Service Tax. This is basically paid to the central government. ये कौन collect कर रहा है? किसको मिल रहा है? Central government को on the supply of goods and service. है ना? The second one that we have beta, that is known as State GST, SGST. This is payable to the state government, as the name suggests. ये state government को जाता है. The next one that we have beta, it is known as Integrated Goods and Service Tax. अब देखो, suppose एक प्रोडक्ट केरला के अंदर ही रहा, तो इसका you will have state GST. एक प्रोडक्ट है जो केरला से it is going to राजस्थान. That means it is crossing borders. बहुत सारे borders cross कर रहे हैं. So when it is crossing borders, you have to apply interstate tax. That interstate tax is known as integrated GST, IGST. So IGST is put whenever you have interstate supply of goods, when you move from one state to another. And the business between two states, that is called inter. So beta, what we can do is we can divide we can divide our business in 2 parts. So let me give you, please write down the proposed tax structure under GST regime. So what I can do,
जीएसटी के अंदर दो तरीके के हमने टैक्स बताए हैं। एक हमने बताया बेटा कि एक तो डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए, वन शुड बी अ डायरेक्ट टैक्स, एंड सेकेंड वी कॉल्ड इट एज इनडायरेक्ट टैक्स, राइट, which is nothing but GST now. Indirect को ही GST बोलेंगे. The direct tax, it can be divided into income tax and corporate tax. Okay. जो हमारा indirect tax है ना, अब हमने दो चीजें लॉन्च की हैं. We have two things. One is called intrastate business and one is known as interstate business. But intra means within. तो अगर एक स्टेट की बाउंड्रीज के अंदर अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रही है, then it is intra, it is within the state. So within the state, if the product is not leaving the state, it is within the state, then you can have two type of taxes there. CGST, collected by central government, payable to the central government, and SGST, payable to the state government. If the business is between two states, दो states के बीच में business हो रहा है, it is going from one state to another, then it is IGST, integrated GST. So that is this. IGST is also levied on import of goods into India. So even on imports, because it is switching countries. तो जब switch country करो या switch आप state करो, you will have to put IGST. IGST is a proportioned into union and state government as per provisions of the IGST Act. So this tax that now I'm talking about, this IGST, this is distributed among the union and state government. It is distributed among union and state government. Okay. Then I want to also talk about what is known as the UTGST. UTGST is basically levied on UTGST is basically levied on the supply of goods and service within union territories of the country, right? But now we want to talk about GST compensation cess. See, in addition to all these taxes that we talked about, there is a cess. This cess is called as GST compensation cess. ये सेस जो होता है ये बहुत लिमिटेड नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज पे ही चार्ज किया जाता है, लाइक इट इज लेवाइड ऑन पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड ड्रिंक्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एज द वर्ड सजेस्ट, इट इज बेसिकली, देखो कॉम्पनसेशन का मतलब समझो, दिस इज बेसिकली चार्ज्ड बिकॉज यू आर नंबर वन, it is charged according to section 3 of the custom tariff act. ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है समझना कि ये किस टैरिफ के अंडर आता है. ओके, सेकेंडली, it is a cess that is collected on the supply of certain goods and services. सिर्फ कुछ गुड्स और सर्विस पे ही ये चार्ज होता है, राइट? ये जो सेस है किन गुड्स पे हमने चार्ज किया है बेटा? We have charged it on things like aerated drinks, car, coal, pan masala, and tobacco, right? The aim is to go ahead and to levy this tax only on goods which are either luxury or which we think are not good for the economy. जैसे for example pan masala and tobacco, उस पे हम लोग cess charge कर सकते हैं, है ना? Similarly, we also have other cess. जैसे for example एक बोलते हैं हम building and construction worker welfare cess, है ना? Then we have road and infrastructure cess. So we have different kind of cess which are there. I don't want to go into that for now, but for now you just have to understand that there is something which is called as GST compensation cess, and it is levied on some goods and services that I have written here. Okay, now we want to talk about the taxes subsumed. Subsumed मतलब जो taxes अब बंद कर दिए गए हैं, those taxes which are no more charged. मतलब ये सारे के सारे taxes की जगह पे now only GST is charged.
So what are those taxes? The first one is that we have is central excise duty, right? This is no more charged, but you still have this central excise duty on 5 products, 5 petroleum and tobacco products. इस पे अभी भी charge होता है. Second, additional excise duty. This is no more charged. Third, service tax, no more charged. Fourth, additional custom duty called countervailing duty, no more charged. Fifth, special additional duty of customs, no more charged. So earlier, the central government used to charge all these taxes, which are no more charged, and all of this has come under the GST. अब state taxes देखते हैं जो अब charge नहीं हो रहे हैं. So state taxes subsumed first. State value added tax. This is no more charge, but अभी भी petroleum products and alcohol पे state value added tax लगता है, VAT लगता है. That is why alcohol का price from one state to another differ करता है. Petrol का price from one state to another differ करता है. वो unify नहीं हुआ है. That has not been unified. Second, entertainment tax that the state used to charge. अब वो charge नहीं होता है. Instead of that, you just have GST. Third, central state tax, no more charged. Fourth, octroi and entry tax, no more charged. Purchase tax, luxury tax, tax on lottery, battering and gambling. These taxes are no more charged. And all of these taxes, beta, they have come under your GST. ये सारे के सारे taxes, whatever we have written, whether it is the state government or central government, they have given up on these taxes. And instead of that, we only have GST, which is now into B. Okay. Now we want to talk about what is known as the GSTN, Goods and Service Tax Network. So ये बात मैंने आपको समझाई है अभी, ध्यान से समझो. बेटा, I have a big country to take care of, है ना? I think I'm not that good at drawing. We have big India, है ना? पूरा हमारा इंडिया का मैप है. Each person from different state is going ahead and paying tax to us. And at the same time, these are different products that we are talking about. It can be movies, it can be food, it can be education. There are different products that we have. The manufacturers can be small scaled or large scaled. Many are intermediate production manufacturers, which may need input tax credit. ये पूरी चीज को इतनी बड़ी कंट्री के लिए मैनेज करने के लिए you need an efficient technology. Efficient technology, right? वो efficient technology के लिए we have this, what is known as the Goods and Service Tax Network. So the Goods and Service Tax Network, it was registered on 28th March 2013 under Section 8 of the Companies Act. And what was this, beta? This is a non-government company, not-for-profit organization. ये जो टैक्स था, it was developed by Infosys Technology, ये जो भी आपका नेटवर्क था, and develop करने के बाद it was managed and maintained by NIC, National Informatics Center. So बनाया किसने? Infosys Technologies ने, and maintain कौन करते हैं? NIC. These two are important things. Now, what is the aim? क्यों ये नेटवर्क बनाना जरूरी था? क्यों एक proper efficient technology चाहिए थी? The aim was that you have a sophisticated network which is easily accessible to the stakeholders, government and taxpayers. So the system should be very simple. The system should be able to tell कि किसने GST पे किया है, किसने GST पे नहीं किया, किस पे कितना फाइन लगना है, किसको input tax credit मिलना चाहिए. Everything should be available for all possible stakeholders, whether it is government, whether it is taxpayers. सबको easily ये सारे information मिल जानी चाहिए. So you need to get that information from a single source, and that is why GSTN is important. Okay. So this portal can be used by tax authorities to track every transaction. हर transaction हम इस पे देख सकते हैं कि किसने कितना tax pay किया है, कितना tax pay नहीं किया. But when we talk about the initial formation of this GSTN,
तो इसमें 24.5% शेयर जो था see this is 51% and this is 49%. Let me just write it like that. And this is beta 51%. 50 से थोड़ा ज़्यादा है ना, this is 50 है ना. अच्छा, this 49%, this is basically divided in two parts, half each. Huh? So half share, it was with the central government and half share was with the state government. तो हम इसको exactly two parts में divide करें 49% को, 24.5 and 24.5 each. This is with center and this is with state. This 51%, it is distributed among different non-government institutes, HDFC and HDFC Bank, ICICI, NAC Strategic Investment and LIC Housing. So इनके बीच में ये remaining 51% distributed. Now, later, the government took all this share also, purchased all this share also. And now there is only central and state government having equal shares in GSTN. So this is fully government owned company having equal shares in the GST. Okay. Okay. Now let's talk about the GST rates. So when I talk about GST rates, there are 5 tax slabs that you should be aware of: 0, 5%, 12%, 18%, and 28%. But a 0 tax slab was only for necessities like fresh vegetable, fruit, dairy products, meat products, etc. ठीक है. और ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं, when we are talking about the tax which is on necessities, this is fine. But बाकी goods पे जो भी हम tax charge कर रहे हैं, whatever we are charging on, so suppose some product is under 18%, तो किसी मीटिंग में GST Council उसको 28% में भी डाल सकती है. That's flexible, right? So it does not mean that the product which is in one slab cannot go under other slab. In every meeting that GST Council has, they can bring some amendments. So कुछ amendments कर सकते हैं. You should be aware of that. So now, this is the first part that I wanted to cover today. So what we have covered today, we have covered how GST was formulated, what is the GST Council, and what were the different GST rates. That's the first topic. The topics that I have in mind for the next class, beta, these are these. So in the next class, I want to go ahead. We have all covered this part now. So I want to talk about these topics tomorrow in the next class. I will talk about the cross empowerment. वो क्या होती है? How much compensation is paid to the state? What is anti-profiteering? What is pan-India rate of e-way bill? What is e-way bill for that matter? How did they roll out that? And what are the objectives and criticisms of GST? ये वाला पूरा part, I will cover it in my next lecture, and that will cover the topic GST. Okay, so let's meet in the next lecture with this topic. Okay, thank you.